Hi all, how are you? I think you all are fine. In my previous video, I told you that I will also explain what I am studying these days. So my first subject is optimization, which I am studying these days. And first of all, I will tell you some basics of this subject and some definitions. And then I will move forward by explaining things. I didn't know mathematics so much, but I will try, and then it's helped me also a lot. So first of all, I will tell you what is convex optimization. I will never go in detail now, but in the other videos I will tell you what is convex function and what is convex sets. But first of all, I will tell you what is convex optimization. In convex optimization, we have to minimize some objective or cost function such that there is some constraint function fix that is smaller than or equal to bi, where I is equal to 1 to n. It is called convex optimization because object function, this function, object function, and this constraint functions are convex function. हम इसको कहते ही मतलब I will also explain this thing in Urdu, in Hindi, because there are also my friends who are Pakistani or who wanted to know. So first of all, I will tell you in English and then explain it in Urdu. अच्छा जी, हाँ, ये क्या है? हम कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे कहते हैं? एक फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम ले लेते हैं, कॉस्ट फंक्शन, उसको मिनिमाइज करते हैं सच दैट कि कोई कंस्ट्रेंट है, लाइक कंस्ट्रेंट फंक्शन एफ आई एक्स दैट इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी आई, और जो बी आई है, ये जो आई है, ये आई जो है 1 से लेके n तक होगा. अगर कोई अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो दोनों कन्वेक्स हों, कन्वेक्स फंक्शन हो, तो हम इसको कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे. I will tell you the details of convex function in other videos, but now I am only telling some basics, so you will get what is optimization. Everything is the optimization problem. सब कुछ जो है वो एक optimization problem ही होता है. In general it is difficult to solve. ये बहुत मुश्किल मतलब ज़्यादातर जो है in general जो है ये बहुत difficult होती है solve करने में. अब ये it's a very efficient and reliable problem, and we can see the least square optimization, linear programming optimization, and convex optimization. In convex optimization, we have to minimize a function and we have to find a point where first derivative is 0. हमने सबसे पहले convex optimization में function को minimize करना है, और फिर उसका हमने देखते हैं कि हमने ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो. Okay, and you know that when we find the critical points, and we have to find the minimizer and maximizer and the increasing function and decreasing function, we have to take first our derivative, and then we have explained that there are critical points and there is an increasing and decreasing function. You use it usually in calculus. In our previous courses you have studied about critical point, maximizer, minimizer, and how to find that function is increasing or decreasing. So now I will tell you what is convex set. I am only giving a general touch that if there is a space
or a set, if there is set C and we have a line segment, like we have 2 points A and B, and if this line segment is enclosed in that set, then it is called the convex set. Like if AB is belongs to C, then it is called a convex set. Otherwise, if we make like this, see, we'll take a set like this, and if we takes the line segment here, then it is not a problem, it's called a convex set. But if we take a line segment here, you see that the whole line segment is not enclosed in the set, so it is not a convex set. Okay, I think you are getting my point. Now, what are the goals in this convex optimization? We have to first recognizing that the problem is convex. हमने पहले सबसे पहले ये देखना है कि प्रॉब्लम जो है वो convex होनी चाहिए. हम इसमें प्रोग्रामिंग और कोडिंग को यूज़ करेंगे और क्वांटिफाई ऑप्टिमल सोल्यूशन. हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे जो क्वांटिफाई ऑप्टिमल सोल्यूशन मीन्स नॉट अ गुड वन, जो सोल्यूशन अच्छा ना हो हमारे लिए, हम उसको क्या करेंगे, टू मेक इट गुड वी इंट्रोड्यूस बाउंड्स. लाइक हम उस सोल्यूशन को अच्छा बनाने के लिए, मज़ीद बेहतर करने के लिए हम उसको कोई बाउंड्री पॉइंट्स दे देंगे, बाउंड्स दे देंगे, जिससे वो हमारा जो सोल्यूशन है वो और गुड हो जाएगा. अब हमारे पास x, आप जानते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और इसे हम n डायमेंशनल वेरिएबल भी कहेंगे, लाइक x1, x2 एंड सो ऑन. और इसका एक और नाम भी होता है, वी विल ऑल्सो say it a decision variable or n dimensional variable. If we have a collection of variables till n, then it is called n dimensional variable or decision variable. Okay, now it is there is a definition of mutually exclusive set. What are mutually exclusive set? Like mutually exclusive sets are disjoint sets. Like if we have a set X and if we have a set Y, then these sets are called disjoint set. Like there is no, if we take the intersection of these set, we got empty set, that there is nothing like common in these two sets, so these are called mutually exclusive sets or disjoint sets. Now we have a set of alternatives X, which is a non-empty set, and which is characterized by preference relation. Like Fy is belong to the set of alternative. Preference relation is like it's a total transitive property. We can say that there is something like criteria we have to follow, and like you know the transitive property, that X prefer Y, X prefer to Y, and Y prefer Z, then X prefer, what we say, X prefer Z. Okay, I think you will get it. You know the transitive property. We in previous cases we see that if X is smaller than Y and Y is smaller than Z, then X is smaller than Z. Okay, I think you get it. If you study mathematics deeply, you know that what is transitive property. Okay, now if there is a preference relation. What is preference relation? I gave you the hint. Okay,
there is some criteria, the coherence and rationality have some criteria by which induced by the preference relation, and preference relation is total and transitive. Now I tell you that X is some set of alternative, X is non-empty set, and XY that belongs to X, generalized by preference relation. The coherence and rationality of the agent imposed by preference relation is total and transitive relation. हमने क्या कहा है? Coherence और rationality of the agent impose that ये कोहेरेंस और रैशनैलिटी हम पर एजेंट पे इम्पोज करती है कि प्रेफरेंस रिलेशन जो है वो टोटल और ट्रांजिटिव रिलेशन है. लाइक हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है. ठीक है, हमने एक्सियम ऑफ कंप्लीटनेस को भी पढ़ा हुआ है और ट्रांजिटिविटी को भी पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब हमने I will tell you what is cost function. There is a function from set of alternative x to the interval minus infinity to plus infinity. It is called the cost function. Assume that the agent prefer x belongs to x to y belongs to x. Like x and y जो हैं वो set of alternative से belong करते हैं if and only if the function at a point x is smaller than equal to fy. It is called it is called the cost function. Okay, basic form. There is any what is the basic form to find optimization problem? There are many like 3 steps to solve a optimization problem. First, we have to determine the infimum of a function. In particular, the infimum of a function is greater than, strictly greater than minus infinity, where x belongs to x. इसका क्या मतलब है? हम infimum निकालेंगे फंक्शन का, और infimum क्या होता है हमारे पास? आपको याद होगा in previous courses we study in calculus that what is infimum. What is infimum? Infimum is the least upper bound. You know, least upper bound. How we will do least upper bound? Tell me. I will tell you what is least upper bound. Okay? Seriously, if we have a set like we have a number line, we will take a number line like this, and we will take some points like like 1, 2, 3, 4, and we have a set A is equal to 1, 2, 3, 4. Now what is the infimum of A? See, infimum of A is equal to, no, what is the upper bound? Tell me. The infimum of A is equal to 1, least upper bound. Okay, and the 1 and the values below 1 are all upper values. Yeah, values before 1 are also called upper bounds, but the least upper bound, what is the least upper bound? सबसे छोटा जो अपर बाउंड है वो कौन सा होगा हमारे पास? बताएंगे. 1 एक अपर बाउंड है और 2, 3, 4 भी अपर बाउंड है, लेकिन हमारे पास सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा? 1. ओके, and infimum
I will give you one more example, that infimum of our empty set is equal to infinity. Okay, I think you will get it. Positive infinity. Okay, because you know that least upper bound, we have to find the least upper bound. So least upper bound is this. Now you know that we have to first determine the infimum of a function. In particular, infimum of a function is greater than minus infinity. It's the first step to basic form to first step in basic form to obtain a optimization problem. Second, if we have some x bar that belongs to the set of alternative x, then the function at a point x bar is equal to infimum of a function. And when we take a argument of a minimum of a function, we get this. Okay, all the minimum points of f on x, जितने भी हमारे पास मिनिमम पॉइंट्स होंगे ना फंक्शन पे, वो सब आ जाएंगे इसमें. सो मिनिमम ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू द infimum ऑफ अ फंक्शन. तो हमारे पास क्या होगा, infimum और मिनिमम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. Which is the point of a argument minimum value. हम जो है उस जर्नलाइज करेंगे. वी विल जर्नलाइज the points of a argument of minimum of a function. Like I gave this example, you can give another example also. We have a function like this and we have some points 3.1, 3.2, 3.6, and we have to find the argument of this function. The least upper bound is a 3.1. We will take the argument, the minimum value is 3.1. Okay, if the function is continuous in a closed interval, then by extreme value theorem the maximum and minimum exist. अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो और क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो, तो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम होता है कि उसके लिहाज से हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करेंगे. अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा और वो क्लोज इंटरवल में, तो हम क्या कहेंगे, उसका मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है. हम क्या कहेंगे, सुप्रीमम इज इक्वल टू माइनस infimum minus of a function. Problem of maximization is reformulated as minimization problem. हम क्या कहेंगे कि जो हमारे पास सुप्रीमम है वो नेगेटिव इन्फिमम माइनस नेगेटिव फंक्शन के इक्वल है. सुप्रीमम आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है सुप्रीमम. आप उलट कर लें इन्फिमम की डेफिनेशन का. द greatest lower bound. Supremum is greatest lower bound. Okay, I know that you will know these infimum and supremum definition in your previous courses, so I am not going to tell you more about it. Now I have gave some examples for the basic example for the optimization problem. First is distance function. Distance function of a point x that belongs to n-dimensional real space in some non-empty set S that contain in n-dimensional R space. We have a value of distance function here as x is equal to infimum y minus x, where y belongs to a non-empty set S as x is fixed. If हमारे पास अगर x fixed हो जाए तो हम क्या कहेंगे, the function is equal to y minus x. Like if what we will say, like we have a previous example like this. We have a function 3.1, 3.2, 3.6. Okay, what did we say, that x is fixed and the value of y is changing. Okay, next is Fermat rule of
Geometrical optics states that the path followed by the light to go from the point A to B is the path which minimizes the time needed from A to B among all the possible points going from A to B. Like what this Farmer law say, that if we have a path like this, A to B, then we have many possible paths to go from A to B, but the path here minimize the time needed, and this is called our shortest path. Okay, we can't go from here to here or here to here, but we go from here to here because it's a shortest path. Okay, and this is the Farmer rule of geometrical optics states. Now what we are doing? Okay, now I will tell you what is the least action principle. It is also similar like the previous example, Farmer's rule. For a mechanical system subject to conservative forces and smooth constraint, establish that T is the kinetic energy of the system and V is the potential energy into the Lagrangian, and L is equal to T minus B, the trajectory is followed by the system from an initial state Q0 at the initial time A to a final Q1 at the final point B are minimizer of the action among all the trajectories. Then Q is a function from the interval from R to AB to n-dimensional R space, said that Q is equal to Q0 and QB is equal to Q1, and the constraints. We will throw a ball having some gravitational force, and then there is a path between the initial value of ball and the final value of ball at time t2. मैंने इसको बहुत मतलब इसकी एग्जांपल को मैंने ज़रा रिफाइन किया है इस चीज़ से कि अगर हम एक बॉल फेंकें एक जगह से दूसरी जगह पे, जब हम उसको फेंक रहे होते हैं तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, तो हम उसको एक जगह से जब दूसरी जगह, यहाँ से एक बॉल फेंक रहे हैं इस तरफ, पाथ फॉलोड बाय द ट्रैजेक्टरीज, एक बॉल फेंक रहे हैं यहाँ से ए से, और ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, हम इसे Q0 कह देते हैं, और वो टाइम ए में मतलब इनिशियल टाइम जो है हमारे पास ए है और फाइनल टाइम क्या होगा हमारे पास बी हम ले लेते हैं, और Q1 हमारे पास उसकी फाइनल स्टेट है। तो उन्होंने इसमें लैग्रेंजियन बताया हुआ है कि हम L इज इक्वल टू T माइनस बी, मतलब हमारे पास लैग्रेंजियन क्या है, हम जो है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लैग्रेंजियन। You will see the detail in the other lectures. Now I am going to tell you what is local minimizer and maximal minimizer. It's only a theory, so I'm not wanted to discuss you, but I will tell you about with an example. So you see, if we have a function okay, like this, random function like this, so you know what is the minimizer and maximizer? This is called the minimizer, minimum value, this is the maximum value, minimizer, and this is the minimum value, this is the maximum value, this is the minimum value। जहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा हो, हम उसे मैक्सिमाइज़र कहेंगे, और अगर हमारे पास डिक्रीजिंग से मैक्सिमम हो वैल्यू हो रही हो या इंक्रीजिंग पे जा रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मिनिमाइज़र।
ठीक है। और इन सब को हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमाइज़र एंड लोकल मैक्सिमाइज़र, ये सब जितने भी हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई, हम कहेंगे ये देखिए ना, ये सारे मिनिमाइजिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो अगर हम कहेंगे सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वैल्यू होगी उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमाइज़र कहेंगे, और जो सबसे ज़्यादा द in all the maximum value, which one is the most maximum, I will say it absolute maximizer, and the lowest value of the minimum is this, so I will say it like absolute minimizer. So I think you will get a concept from this function, so you will deal with it. Now I am going to do one example. We have let x is equal to r. x हमारे पास रियल स्पेस में है और हमारे पास एक फंक्शन है. वी हैव द फंक्शन एंड वी हैव टू मिनिमाइज द फंक्शन ओवर द रियल स्पेस आर. और हम इसके जो है ना, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं रियल स्पेस आर पे. तो हम क्या करेंगे, आपने हमेशा, या आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट उसका डेरिवेटिव लेते हैं. उसका हमने कहा है कि उस पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो प्लस इन्फिनिटी है. हमने उसका डेरिवेटिव लिया, उसको, उस डेरिवेटिव को हमने ज़ीरो की इक्वल कर दिया. आपको पता है, याद होगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं या फिक्स पॉइंट निकालते हैं, तो हम इसी तरह निकालते हैं हमेशा कि फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया. तो हमने यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, और उसको हमने ज़ीरो को इक्वल कर दिया और हमने x की वैल्यू निकाल लिया. फिर हमने क्या कहा है कि ये जो x है ना, हमारे पास यूनिक मिनिमम पॉइंट है. ये क्या है, हमारे पास मिनिमम पॉइंट है. अगर जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो क्या होगा, मिनिमाइज़र एग्जिस्ट करेगा, और अगर स्मॉलर देन ज़ीरो हो तो मैक्सिमाइज़र एग्जिस्ट करेगा. ये हमने बातें पहले की हुई हैं, मतलब पिछले क्लासेस में. अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे. वी विल टेक सेकंड डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन ज़ीरो. दिस मीन्स दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. if the second derivative is smaller than zero, then it is a decreasing function, and if the second derivative is greater than zero, then it is an increasing function. Now we will put a unique minimum point, this, in the value in the function, and we get the function's value like this. Okay, now you see there is a convex function definition. If there is a function from Rn to R, Rn, what is Rn? N-dimensional real space, and R is the real space. If we satisfy these two properties, then it is called convex function. First, a convex function is convex if its domain of a function is convex for all values xy belongs to the domain. Okay, हम फंक्शन को कन्वेक्स तब कहेंगे जब उसके जो डोमेन है वो भी कन्वेक्स होगी. फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ एफ एंड लैम्डा इज बिटवीन द 0-1 इंटरवल, देन एफ लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस वाई लैम्डा वाई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस lambda fx plus, what is this? It's called the line segment. Okay, we have a function, we have 2 points x and y, and there is a function like this, and there is a chord or line segment here. If the graph is below, if the graph is above the, like if the function is below the chord, then it is called convex function. If it is above the chord, then it is called concave function. Like
we have it's an example like x log x is equal to convex function. This is called the convex function. When you solve it, you can know that this is a convex function. Now I will explain you what is epigraph. I will give you the general thing. I'm not going into the details, but I'm going in the general thing that if we have a function, convex function, okay, like this, or you can take like this, okay, then we have to find the epigraph. All the points above this graph is called the epigraph. All the points above the function from a set, all the points above the function of the set, this is the function, all the points, all the points are called the epigraph of function. Okay, I think you will understand what is epigraph. एपिग्राफ एपिग्राफ तब कन्वेक्स होगा जब उसका फंक्शन कन्वेक्स हो. इफ द फंक्शन इज कन्वेक्स, इफ एंड ओनली इफ द एपिग्राफ इज कन्वेक्स. ओके, now I will explain you what is the convex conjugate. Okay, convex conjugate convex function. Okay, I will tell you this one. If we have a function f, okay, from the set alternative x to the interval minus infinity to plus infinity, then and we have a y-intercept mx plus q. Okay, q is some constant, okay, and m is the slope. In the previous classes you know that m is the slope in y intercept, and you know the definition of slope also. Suppose we can take m is equal to x star. We take the slope equal to x star. Okay, if we have a function fx is equal to, we take y is equal to fx. okay, y इंटरसेप्ट को हमने क्या कर लिया, fx के इक्वल ले लिया है, और हमने स्लोप को क्या किया, स्लोप को हमने x स्टार के इक्वल ले लिया है. और हम एक और काम करेंगे कि q को हमने अल्फ़ा के इक्वल ले लिया. हम ये कन्वेक्स कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमने इन चीज़ों को ऐसे डिफाइन सपोज कर लिया कि q जो है अल्फ़ा के इक्वल है, स्लोप जो है x स्टार के इक्वल है, और y जो है fx के इक्वल है. तो हम क्या कहेंगे, अब हम चीज़ों को इधर पुट कर देंगे. हम इसको ना इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, हम वैसे ये भी लिख सकते थे एक्स स्टार एक्स, लेकिन हम इसको ना इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे. ठीक है, एक्स स्टार, ओके, एक्स, और एक्स स्टार जो है हम किस में बिलोंग कर रहा है, डुअल स्पेस एक्स से, और एक्स जो है हमारे पास एक्स से बिलोंग कर रहा है. यू नो, ये डुअल स्पेस से बिलोंग करती है, ये डुअल स्पेस से. आई थिंक यू नो व्हाट इज डुअल स्पेस. और हम क्या करेंगे, प्लस, हमने क्या किया, हम प्लस अल्फ़ा, हमने चीज़ों को क्या किया, रीअरेंज करके उनको पुट कर दिया हमने, क्योंकि वो कन्वेक्स कॉन्जुगेट निकालना है ना, तो इस वजह से हमने इस तरह से किया. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं ना कि एक्स एफ एक्स, वी विल राइट लाइक दिस ऑल्सो, लाइक एफ एक्स माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स स्टार inner product of, okay, you know, I didn't understand this before, but when I went to the professor and I told him that I am not understanding, then he gave me a easy description of this, and then I understand what is happening here. Otherwise I will never understand what is happening here. Fx minus
I will also take this to that side and alpha to that side. You know, it's the general thing. ठीक है, आपको समझ आ रहा है? आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा. पता नहीं, मैं इतनी अच्छी मैथमेटिशियन तो नहीं हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ. आई एम नॉट अ गुड टीचर, बट आई एम ट्राइंग. मे बी इट विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर फॉर मी. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है ना, वो कंटेन करता है फंक्शन को. जो हमारे पास हमने फंक्शन लिया था ना, ये वाला. अब इसको अब वो मत कर दीजिएगा, मतलब कंफ्यूज. डू नॉट कंफ्यूज फंक्शन f एंड दिस y इंटरसेप्ट. ओके, आप क्योंकि f है ना, तो आप कर सकते हैं. y इंटरसेप्ट फॉर f(x) is contained in the function f. So we will, if and only if, तब पॉसिबल है. if and only if, you know, if and only if, तब पॉसिबल है when हमारे पास ये जो है if is स्मॉलर. हमारे पास ये इनइक्वालिटी अगर होल्ड कर जाए, द y इंटरसेप्ट कंटेन इन f if and only if the function the y intercept minus the inner product of the slope and the set x which belongs to the capital X. ये एक ऑल्टरनेटिव है सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव में. स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस अल्फा. अल्फा इज सम कांस्टेंट.